प्रपल्शन मॉड्यूल का मुख्य उद्देश्य है लैंडर तथा रोवर को पृथ्वी की कक्षा से चंद्रमा की कक्षा में, जो कि 100 किलोमीटर की वृत्ताकार कक्षा होगी, उसमें उचित अभिवृत्ति में लैंडर मॉड्यूल को अपने से पृथक कर चंद्रमा की सतह पर भेजना है। ऐसा करने के लिए इसमें एमएमएच और मॉन का प्रयोग कर 440 न्यूटन के थ्रस्टर्स वाले इंजन्स लगे हुए हैं। इसमें आवश्यक संचार सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। Speaking about the major milestones in the journey of Chandrayan 3 to the moon, the spacecraft consists of propulsion module, lander and rover. Lander is planned to touch down at south pole of moon. The major 10 phases of the mission are: the first phase, called the Earth-centric phase, comprises of pre-launch, launch, ascent and earthbound maneuver. While the second phase is the lunar transfer phase, as the name suggests, the Chandrayan spacecraft moves closer to the moon. Next 8 phases are in the moon orbit. The third being the lunar orbit insertion, followed by the moon-bound maneuvers phase, which mark the fourth phase. And next it is now that the propulsion module separates from the lunar module when 100 by 100 circular orbit of the moon is achieved. The Chandrayan 3 in its 6th phase carries out D-boost from 100 kilometers to 100 by 30 kilometers orbit, followed by the pre-landing phase as 7th phase, and then the most awaited landing phase takes place. आपके सामने है मिशन नियंत्रण कक्ष का दृश्य। सभी सेंटर डायरेक्टर्स अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस किस तरह पूरा हो रहा है। दर्शक दीर्घा भी इस इंतजार पे। प्रमोशन से हम 5 मिनट की दूरी पर हैं। -5 minutes. Most of you might recall the Chandrayan 2 mission and the intense moments when all the enthusiastic Indians were waiting for the touchdown of the lander on the surface of moon. The launch view gallery with the overwhelming crowd of visitors. पूरे दर्शक दीर्घा यहाँ बहुत उत्साहित। मौसम में थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन सब अपनी सुविधाओं के साथ में यहाँ उपस्थित हुए हैं। We are close to 4 minutes from the scheduled launch time. -4 minutes. Gaining from the heritage of Chandrayan 2, the Chandrayan 3 is upgraded in several aspects for the enhanced robustness through extensive ground tests and simulation. Onboard computer in flight mode. ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस जारी है। इस दौरान सभी संचार तंत्रों की स्वास्थ्य जांच, बैटरी आवेशन पूर्ण किया जा चुका है। कुछ अंतिम गतिविधियों जैसे ऑनबोर्ड कंप्यूटर पर रियल टाइम प्रोग्राम लोड करना, पायरो लाइन को आर्म मोड में लाना, गैस टैंक्स का अंतिम आवेशन, और यह सभी घटनाएं संतोषजनक तरीके से पूर्ण की जा रही हैं। -3 minutes. अब हम उड़ान से 3 मिनट की दूरी पर हैं। प्रमोशन तथा इस प्रमोशन की घटनाक्रम को पहले ही बताया जा चुका है। सर्वप्रथम दोनों S200 स्ट्रप ऑन बूस्टर प्रज्वलित किए जाएंगे T0 पर।
Pressurization of the hydrogen tank commenced. S200 के प्रज्वलन के 108 सेकंड के पश्चात L110 जो कि -2 minutes, तरल नोदक पर आधारित चरण है, इसका प्रज्वलन शुरू कर दिया जाएगा। L110 के प्रज्वलन के पश्चात करीब 137 सेकंड पर S200 बूस्टर्स को यान से पृथक कर दिया जाएगा। We are close to 1.5 minutes from the scheduled launch time. सभी दर्शकों को ज्ञात है यह एक ऐतिहासिक मिशन होने वाला है। पूरे भारतवर्ष की आंखें इसमें हैं। इस यादगार पल के लिए यहां सब उपस्थित -1 minute, All अब हम sound उड़ान down. से 1 मिनट की दूरी पर -55 seconds, -50 seconds, All sequences armed. Stage ready. -45 seconds, -40 seconds, L110 VHPP open. MOV 79 -35 open. seconds, -30 seconds, Real-time programs activated. -25 seconds, L110 VSPP open. -20 seconds, -15, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Plus 5 seconds. Lift off normal. Here tracking. we have a majestic liftoff of tracking. LVM-3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayan 3 spacecraft. P2 tracking. प्रज्वलन और सफलतापूर्ण उत्थापन LVM-3 M4 रॉकेट का। यह भीमकाय रॉकेट आसमान को चीरते हुए अपनी भयानक दहाड़ से चारों ओर कंपन उत्पन्न कर रहा है। इसे हम यहाँ महसूस कर सकते हैं और यही दहाड़ है जो वैज्ञानिकों को रोमांचित करती है। LVM-3 के उत्थापन के साथ ही हमारे अंतरिक्ष यान चंद्रयान 3 की चंद्रमा की यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। As the rocket is soaring through the clear skies, every second moving closer to the accomplishment of the most important milestone in its mission to moon. Every Indian witnessing the launch live is content with the feeling of watching history in the making. चंद्रमा की सतह पर अपना छाप छोड़ने के लिए चंद्रयान 3 अपने मिशन को पूरा करने निकल चुका है। वर्तमान में दोनों S200 स्टेप ऑन बूस्टर सामान निष्पादन करते हुए अपनी निर्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ रहे हैं। The S200 motors thrusting simultaneously, generating a peak thrust of close to 6,000 kilonewtons in vacuum. They are made of HTPB-based solid propellant. 204.5 tons in each strap-on. Close to 2 tons of propellant being burnt each second. S200 स्टेप ऑन बूस्टर्स का कुल प्रज्वलन काल 126 सेकंड का है और अभी अभी घोषणा की गई L110 स्टेज का भी प्रज्वलन शुरू हो चुका है। Apart from the strap-ons, Performance normal. the core stage has also commenced its operation. This stage, based on combination 200 stages are separated. of hypergolic earth storable liquid propellants guidance initiated. UH-25 and N2O4. Now the S200s have been separated. घटनाक्रम के अनुसार यह यान इस यान से S200
स्ट्रैप-ऑन बूस्टर्स को सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है। यह काम सेपरेशन मोटर्स की मदद से किया जाता है। इसके बाद L110 तरल नोदक पर आधारित और विकास इंजन के साथ यह चरण सामान्य निष्पादन करता हुआ अपने उद्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ रहा है। अभियान 3 minutes. क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत है। L110 stage performance normal. The trajectory of launch vehicle is closely following the prediction. Payload fairing separated. जी हाँ, पेलोड फेयरिंग को पृथक कर दिया गया है यान से, क्योंकि यान अब 114.8 किलोमीटर की ऊंचाई प्राप्त कर चुका है। इस चरण का कुल प्रज्वलन काल 200 सेकेंड होता है और इस दौरान यह करीब 1600 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न करता है। We are 220 seconds past the launch time. Current altitude is 135 kilometers. In the 200 seconds of its operation, the L110 stage carries the rocket up to 175.5 kilometers altitude and imparts a relative velocity of 4.18 kilometers per second. That is 250 kilometers every minute. L110 stage performance normal. LVM-3 M4 रॉकेट का द्वितीय चरण पूर्णतः सामान्य निष्पादन करते हुए इस चरण में कुल 113 टन के तरल नोदक भरे जाते हैं। N2O4 तथा UH-25 अर्थ स्टोरेबल प्रोपेलेंट को ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है इस चरण में। Stage ignition is authorized. अगला चरण C-25 का प्रज्वलन भावी है। Plus 5 minutes. L110 stage thrust cut off and separated. C-25 ignition command. 25 ignition confirmed. That's a piece of really good news that the third stage has started its operation. The C-25 stage has been ignited. जी हाँ, एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया होती है क्रायो इंजन का इग्निशन, और इसके प्रज्वलन के साथ ही तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा है मिशन नियंत्रण कक्ष। तृतीय चरण C-25 वर्तमान में प्रणोद उत्पन्न कर रहा है। पूर्णतः सामान्य, सभी तंत्र पूर्णतः सामान्य हैं। 118 kilonewtons thrust in vacuum is what the stage develops with its 28.6 tons propellant combination of liquid hydrogen and liquid oxygen. Present altitude Stage is low. performance normal. तृतीय और यह अंतिम चरण है इस यान का C-25। यह क्रायो ईंधन पर आधारित चरण है जिसमें लिक्विड हाइड्रोजन, लिक्विड ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है। इसमें कुल 28 टन का क्रायो ईंधन पूरी सुरक्षा तथा सावधानी के साथ भरा जाता है। इस चरण में 186 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न होता है और यह करीब 640 सेकंड तक प्रज्वलित रहेगा। इसमें दिशा नियंत्रण के लिए इंजन जिम्बल का इस्तेमाल किया जाता है। क्रायो ईंधन का विशिष्ट आवेग 446 सेकंड के करीब होता है। Currently, the rocket is at an altitude of 210 kilometers. Plus 7 minutes. While there is no much variation in altitude, this stage will add to the relative velocity immensely. Cryo stage आइए performance अब आपको normal.
पेलोड के बारे में जानकारी देते हैं। लैंडर मॉड्यूल्स पे कई वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए पेलोड्स लगाए गए हैं। India's prestigious lunar landing spacecraft Chandrayan 3 moving closer to its intended injection spot in the orbit. The propulsion module provides propulsion for earthbound maneuvers, translunar injection, and moonbound orbits. It also has a payload to study the spectral and polarimetric measurements of Earth and lunar orbit. The abbreviated name of the payload is SHAPE. Among the payloads of the lander module, the following are included. A Langmuir probe called Rambha to measure the near-surface plasma density, that is the density of ions and electrons, and its changes with time. The second payload is Chandra's Surface Thermophysical Experiment, or CHASTE, to measure thermal properties of lunar surface near polar regions. To measure the seismicity around the landing site and delineating the structure of the lunar crust and mantle, payload ILSA is there. The rover, after its descent, will further the scientific study objectives through its own payloads. For better understanding of chemical and mineralogical composition of lunar surface, LIBS, or laser-induced breakdown spectroscope, is included. Another payload is the alpha particle X-ray spectrometer. जी हाँ, लैंडर मॉड्यूल में 3 पेलोड हैं, रोवर में 2 और प्रोपल्शन मॉड्यूल में 1 पेलोड भेजा गया है। चंद्रयान 3 के स्वदेशी लैंडर और रोवर में नितभारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। यह अंतर्ग्रही मिशन के लिए भी आवश्यक तकनीकों का प्रदर्शन करेंगे। लैंडर के पास यह क्षमता है कि वह चंद्रमा की उबड़-खाबड़ सतह में भी बड़ी सावधानी से उतर सकेगा और रोवर को बाहर लाने के लिए और संचार सुविधाएं प्रदान करने के लिए सक्षम होगा। चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर में कुल 6 नितभार हैं। रेडियो एस्ट्रोनॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आयनोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, जिसे शॉर्ट में रंभा कहा जाता है, यह चंद्रमा की सतह के पास प्लाज्मा के घनत्व तथा समय के साथ बदलाव का मापन करेगा। इसके बाद चंद्र सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट चंद्रमा के ध्रुवीय सतह के आसपास की थर्मल प्रॉपर्टीज का मापन करेगा। इंस्ट्रूमेंट फॉर ल्यूनर सिस्मिक एक्टिविटी लैंडिंग साइट के आसपास के क्षेत्र में भूकंप जैसी गतिविधियों का पता लगाएगा। रोवर में चंद्रमा की सतह के तत्वात्मक विश्लेषण के लिए लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप और अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोप इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। एक बहुत ही दिलचस्प वैज्ञानिक नितभार है शेप स्पेक्ट्रोपोलैरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ, जो कि चंद्रमा से पृथ्वी से परावर्तित नियर इंफ्रारेड किरणों का विश्लेषण दूसरे जीवन सहायक ग्रहों को खोजने में मदद करेगा। वर्तमान में C-25 इंजन कार्यरत है और पूर्णतः सामान्य प्रदर्शन कर रहा है। अब हम प्रमोशन से 700 सेकंड की दूरी पर आ चुके हैं। सापेक्ष गति 6.5 किलोमीटर प्रति सेकंड, ऊंचाई 191 किलोमीटर। As we have told you about the Chandrayan 3's upgrades in the aspects of enhanced robustness through extensive ground tests and simulation. During the last phase of landing, the module will have a vertical velocity of less than 1 meter per second and a horizontal velocity of less than 0.5 meters per second from a height of 3 meters. The lander legs are designed to be robust enough to thrive the impact. The cameras are tuned to take pictures ahead of the landing and enable intelligent decision making for choice of best location to land, avoiding craters and boulders on lunar surface.
The successive pictures will also enable the craft to determine its horizontal and vertical velocity in real time. Laser Doppler velocity sensor is an upgrade in Chandrayaan 3 over its predecessor. It helps to determine instantaneous velocity of craft. Insights into the behavior of Chandrayaan 2 in the last few minutes of its descent has revealed to the scientists the necessity for upgrade in the guidance algorithm. Inputs from various sensors are used by the autonomous navigation guidance algorithm of Chandrayaan 3 to plan the flight path to the most suitable landing spot. The engines of Chandrayaan 3 are capable of more gradual throttling also. वर्तमान में हम प्रमोशन से 817 सेकंड की दूरी पर आ चुके हैं। करीब 950 सेकंड पर तृतीय चरण क्रायोजेनिक इंजन को शट ऑफ कर दिया जाएगा। और उचित अभिवृद्धि प्राप्त कर चंद्रयान 3 को यान से पृथक कर दिया जाएगा। चंद्रयान 3 को LVM-3 M4 द्वारा एलिप्टिकल पार्किंग ऑर्बिट में लॉन्च करने के पश्चात 170 किलोमीटर की पेरिजी पर क्रमशः 5 बार मैन्यूवरिंग कमांड दिया जाएगा। 5वीं बार में यह पृथ्वी से चंद्रमा की ओर प्रस्थान करेगा, जिसे हम ल्यूनर ट्रांसफर ऑर्बिट के नाम से जानते हैं। फिर 5 अगस्त 2023 को यह चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करेगा और फिर क्रमशः 5 मैन्यूवरिंग के पश्चात प्रोपल्शन मॉड्यूल चंद्रमा की 100 किलोमीटर की वृत्ताकार कक्षा में स्थापित हो जाएगा। यहाँ यह उचित समय और अभिवृद्धि में लैंडर मॉड्यूल को पृथक करेगा और 23 अक्टूबर 2023 को चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। Plus 15 minutes. We have come close to 900 seconds after the launch. Currently, the C-25 stage is thrusting. Current relative velocity is 9.29 kilometers per second. जी हाँ, कुछ ही क्षणों में हम देखेंगे 3 satellites separated. चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक अंतक्षेपित कर दिया गया है एलिप्टिकल पार्किंग ऑर्बिट पर। Chandrayaan 3 has attained a major milestone successfully. Chandrayaan 3 mission accomplished. Handing over to mission director. This is mission director. The LVM-3 M4 Chandrayaan mission accomplished its precise satellite injection conditions. LVM-3 M4 mission is successful. Jai Hind. The launch has also added a feather in the cap of LVM-3 rocket. You can watch the jubilant congratulatory gestures of ISRO scientists in the Mission Control Center. जी हाँ, चंद्रयान को सफलतापूर्वक अंतक्षेपित कर दिया गया है, लेकिन चंद्रयान 3 की यात्रा अभी जारी है। अब इस मिशन के बारे में हम अध्यक्ष महोदय से सुनेंगे और हम आपसे आज्ञा लेते हैं। We sign off. नमस्कार। Up next is address by Secretary DOS, Chairman ISRO. Dear LVM-3 has already put Chandrayaan 3 craft into the precise orbit around Earth. 170 by 36,500 kilometer was its intended target orbit, and it is precisely there now. And let us wish all the best for the Chandrayaan 3 craft to make its further
orbit racing maneuvers and travel towards moon in the coming days. So let me wish all the very best to Chandrayaan-3 for its further journey towards moon. Before that, let me introduce the team behind this mission, the mission director, Mr. Mohan Kumar, and also the project director of LVM3. And we have also the mission director for the Chandrayaan-3 craft, the project director of Chandrayaan-3, Veera Muthuvel. So over to them, Mohan. Thank you, sir. Honorable Minister of State for Science and Technology and Departments of Space and Atomic Energy, Dr. Jitendra Singh, respected Chairman ISRO and Secretary Department of Space, former secretaries of the department, invited dignitaries, respected dignitaries and invitees, I am very happy to report here that the LVM-3 M4 vehicle has injected the Chandrayaan-3 satellite to the precise orbit, and once again the vehicle is proved to be the most reliable heavy lift vehicle of Indian Space Research Organization. Congratulations to the teamwork of ISRO family. I would like to appraise three things here. The vehicle systems are in the continuous process of quality improvement, especially in the event of our human rating efforts towards making the systems reliable. Secondly, the payload also, capability of the payload also is improved by mission strategies as well as vehicle engineering approaches. We are in the process of increasing the launch frequency of this vehicle considering the national requirements as well as satellite demands. Here, so many improvements we have incorporated in this vehicle. For example, the S200 nozzle, they are processed exactly as per the human rating standards, enabling us to have 100% NDT, and the inherent pocket erosion characteristics are removed. The L100 stage Vikas engine, mostly it is 100% qualified to be the human rated engine with indigenously developed LET throats, and the pocket, the back wall gas entry also is eliminated, and it is a perfect system. And CE20 stage also is perfectly, actually, sir. Good. So we will describe all those details later because of shortage of time. Yes, sir. I take this opportunity to thank all the mission executives because mission executives for all the supports all along the launch campaign process as well as the launch. Once the launch manifest is released and mission executives are identified, really this is a penance of so many across the ISRO centers, our launch vehicle centers, VSSC, LPSC, IPRC, IASU, SDSC, SHAR, URSC and SAC, along with all our industrial partners, major players to the small-scale industries who supply us with all the deliverables in time, quality products, the suppliers of chemicals, propellant ingredients, suppliers of avionics systems, and our own GOCO facility operators. Actually, the industrial manpower is really our ISRO's virtual manpower. Everybody's efforts went into this, and also the prayers and best wishes of all our seniors, retired executives, everyone's prayers and our own family members. I take this opportunity to pray God Almighty for all the blessings in the form of this success, which was the penance by the ISRO family for last 73 days. And my prayerful pranams for the successful continuous operations of the Chandrayaan spacecraft, for its safe and soft landing on lunar surface and further experiments. Thank you. Jai Hind. Respected Chairman ISRO, Center Directors, dignitaries and my team Chandrayaan-3, very happy to note that our Chandrayaan-3 has been injected into an intended orbit with very close orbital parameters. Congratulations and thanks to LVM3 team. And all our spacecraft health parameters are normal, including the power generations in both propulsion module and lander module.
Our journey to moon has begun now for the most awaited soft landing. We'll be closely monitoring and controlling the spacecraft from ISTRAC Bangalore. Many critical events are lined up, starting from earthbound maneuvers, insertion into the lunar orbit, and separation of lander, and set of deboost maneuvers, and finally the power descent phase for a soft landing. I take this opportunity to thank Chairman ISRO, Director URSC, and all the center directors for entrusting me this opportunity, who have been the motivational and guidance force behind this mission. My special thanks to Chandrayan 3 project executives, Associate Project Director Kalpana, Deputy Project Directors, Project Managers across the ISRO centers who have provided an excellent support in building the spacecraft. My special thanks to the expert committees for their constant guidance throughout the various stages of the project. I also thank the various work centers and industries who have contributed directly and indirectly to this mission. My special thanks to URSC council members, group directors, deputy directors across the ISRO centers, and looking forward for the soft landing with all your wishes and blessings from the God. Thank you. We have our Honorable Minister for Space, Minister of State for Space, Dr. Jitendra Singh ji, amongst us during this historic occasion of success of launching of LVM-3. So we would like to hear a few words from him. Over to you, sir. It is indeed a moment of glory for India and a moment of destiny for all of us over here at Sriharikota who are a part of the history in making. Thank you, Team ISRO, for making India proud. And thank you, Honorable PM Narendra Modi ji, for having made this possible by unlocking the gates of Sriharikota and enabling the India's space sector. You would recall, Honorable Prime Minister had very recently said, sky is not the limit. And living by his words, I think the Chandrayan today has gone beyond the limits of sky to discover the unexplored horizons of the universe beyond. Ladies and gentlemen, this day today, the 14th of July 2023, is also a day of vindication. Vindication of the dream that Vikram Sarabhai saw 6 decades ago. He might have been short of resources, but never short of confidence. And when we see those pictures of a launcher vehicle being carried on the carriage of a bicycle, without any remorse, without any slightest embarrassment, that is because Vikram and his team had faith in themselves, faith in India's potential, faith in India's acumen. And today, here, we are vindicating and we are reiterating India's indigenous capabilities, living up to the ideal of Atmanirbhar Bharat. And before I conclude, ladies and gentlemen, as Mother India enters into the next 25 years of this Amrit Kal, she pledges to play a leading global role in the emerging world scenario of 21st century. Thank you and congratulations once again. Thank you, sir. We will also introduce the directors of the centers who have done all those great work of building the rocket, building the scientific instruments for Chandrayan-3, the Chandrayan spacecraft itself, and made all those critical systems, and also the agencies who are going to handle the rest of the mission part, the tracking and the ground stations, and all those teams are here. So I request the directors of those centers to join. First, Director of Vikram Sarabhai Space Center. Good afternoon, India. In last 1 year, this is the 10th mission, including the precise landing of the reusable launch vehicle.
So with this mission, this is the 7th mission of LVM-3, the successful mission. With this, the success rate of LVM-3 is 100%. And this is the ideal vehicle for Gaganyaan. Some of the changes that we are incorporating in Gaganyaan, we have implemented here. And the Mark III has crossed the reliability of 0.9 and inching forward. So I take this opportunity to salute the entire ISRO community, especially the VSC community and all launch vehicle centers, industry partners for making the stages, making the sub-assemblies and testing. In fact, this is the 3rd launch of LVM-3 in 1 year. You know, the realizing the stages, assembling, testing, and then launching 3 LVM-3s in 1 year is a Herculean task. I salute the industry as well as all the ISRO centers for this. And I wish all the very best. We know that when the beginning is good, the ending has to be good. I wish all the very best to the Chandrayan for its solitary journey through the vastness of space and for making a feather-like soft landing in the 4th week of August. Good luck. Thank you. Dr. Narayanan, Director LPSC. Good afternoon to all of you. It is a historical event for Indian space program and a proud moment for all the Indians across the globe on this momentous occasion of the successful launch of the Chandrayan-3. 3-in-1 spacecraft in the required orbit with the highest level of precision by our heaviest launch vehicle, LVM-3. After the 2 launches of LVM-3 vehicle this year, this vehicle is realized in the record shortest time. Today, once again, all the vehicle systems have performed, demonstrated the 7th successful launch. As you all know, the entire spacecraft community has put wholehearted effort during last 4 years, and we have realized a marvelous, great scientific satellite. For this mission, the entire vehicle performance is as expected, as predicted. In fact, the precision in which the satellite is launched shows the reliability of this vehicle. And we too have 4 liquid propulsion modules, 2 in the launch vehicle. The L110 stage, C25 stage, it has performed extremely well along with all other vehicle systems. We too have 2 more propulsion modules, one for taking the spacecraft to the moon, another one for soft landing. I think it is already well integrated, the system health is very good. Today's success is the culmination of the dedicated, smart and hard work of all the ISRO team members and the work culture of ISRO and the review process what we follow. I am sure all further mission operations will be a grand success and we'll have the successful soft landing. On this occasion, let me congratulate and compliment the members of ISRO team, our family members who have really sacrificed, the partners from industry and academia, and the various review fora. Thank you. Jai Hind. The Chandrayan craft was built at the URAO Satellite Center, so I request the Director of URC to speak. Good afternoon, ladies and gentlemen. I take this opportunity to first thank my colleagues from the Launch Vehicle Center for providing a textbook-like launch for Chandrayan-3 on its journey towards moon. Thank you very much. And as Director LPSC and Director VSSC mentioned, realizing this kind of launch vehicle, 3rd launch vehicle within a year's time is indeed a Herculean task. And thank you very much for the effort that has been put by all the members of the launch vehicle community and the industry supporting them. Coming to Chandrayan-3, Mohan was telling that it is a penance. In fact, it is a penance of the Chandrayan-3 team for the last 4 years, which has come today as an outcome. It is sitting like a brain sitting inside the head of a human being on that mighty vehicle. On top of that, that satellite was sitting,
and it was such a happy moment to see that satellite getting separated. And our work continues from now for the next 42 days till we reach the lunar orbit and touch down softly on moon. So we'll speak the rest of the things after the soft landing on top of moon. Till then, thank you very much for all the members of the satellite community and the industry for your support, which has been continuing over several years, and I'm sure will continue in future also. Thank you very much. Space Applications Center Ahmedabad plays very important role in our scientific instruments and building of the satellites. Over to Director SAC, Nilesh Desai. Thank you. Good afternoon, everybody. At the outset, let me compliment Team ISRO for this excellent work, and especially vehicle team as well as the project team. And as we begin this historic journey towards moon, well begun is half done, as it is said. So I'm sure that we'll succeed in our effort and endeavor to land on moon safe and in secure manner with a soft landing after 45 days. So I wish all the best to all the people who have contributed directly or indirectly, and especially to the project team, spacecraft team, as well as my team at Space Applications Center, who has developed sensors and other hazard detection and avoidance system which will help for a secured and safe landing on moon. So once again, I thank all who have contributed in this mission. Thank you. Director of this center, Satish Dhawan Space Center, is the chairman of the Launch Authorization Board and also realizing the solid motors of this rocket. So over to Director SDSC Shah Rajarajan. Honorable Minister of Science and Technology, Dr. Jitendra Singh, respected Chairman, our mentors and the dignitaries present here, and the entire ISRO family. A very successful launch, and hearty congratulations to all the LVM-3, M4 and Chandrayan 3 mission. So once again, the Fat Boy has done its job and put a very precisely our prestigious lunar mission Chandrayan 3 in the transfer orbit. And I congratulate the SDSC SHAR team, because throughout this launch, we had many launch campaigns of C-55 and 56. Along with that, we are proud to have this. In spite of the weather conditions here, we have successfully launched LVM-3 in the prescribed launch window time between July 12th and 19th. And we had a very good, smooth campaign here, and all the hearty congratulations to the entire launch vehicle team, as well as for the last 2 months for hosting the Chandrayan 3 team here and carrying out all the tests to make sure that Chandrayan 3 is also ready for the mission. And I also thank our entire logistics team who handled this huge crowd throughout this campaign period, in particular last 2-3 days. And my sincere thanks to the various Indian industries who are now participating in various aspects of solid motor processing as well as the assembly activities of our launch vehicle to make it successful. And I wish a glorious success in the future to come. And I wish, as mentioned in the last week of August, to have a successful soft landing of Chandrayan 3 lander on the moon surface and to make history. Once again, thank you. Jai Hind. I request all center directors to join on the podium. Please come, all of you. Can you lower this? Please come. Please come here. Come. Please come.
माझं गाव, माझं खेडं ही संकल्पना केव्हाच मागे पडून गावची कूस बदलली आहे. 21व्या शतकात बदलतं गाव बदलती खेडी ही संकल्पना आता सगळीकडे रुजू लागली आहे. विज्ञान तंत्रज्ञानाच्या युगात गावांचा चेहरा मोहरा बदलतोय. बदलती खेडी ही तर नागरिकांच्यासाठी नांदीच ठरत आहे. अशाच बदलत्या गावगाड्याचे रूप आम्ही दाखवणार आहोत मालिकेत विकासाच्या वाटेवरचं गाव. लाईव्ह 24 तास न्यूजवर पाहायला विसरू नका. विकासाच्या वाटेवरचं गाव. सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक, प्रशासकीय, औद्योगिक, कृषी, क्रीडा अशा विविध क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या आदर्श व्यक्तिमत्वांचा प्रेरणादायी प्रवास आम्ही उलगडणार आहोत. पहा आमचा खास कार्यक्रम मुलखा वेगळी माणसं. आपण जरूर पहा लाईव्ह 24 तास न्यूज. समाजभान जपणारी मुलखा वेगळी माणसं. नमस्कार, मी ऐश्वर्या आपल्या सर्वांचंच लाईव्ह 24 तास मध्ये स्वागत करते. आपल्या सर्वांसाठीच आम्ही घेऊन येत आहोत विकासाच्या वाटेवरचं गाव ही मालिका. जर तुम्हालाही वाटत असेल माझा गाव आदर्श गाव, माझा गाव विकासाच्या वाटेवरचा गाव, तर आजच संपर्क करा फक्त लाईव्ह 24 तासशी आणि सहभागी व्हा विकासाच्या वाटेवरचं गाव या मालिकेमध्ये. से इस बहुचर्चित क्षण का आंखों देखा हाल प्रस्तुत कर रहे हैं. उपलब्धियों के भारतीय आकाश का एक और दैदीप्यमान सितारा चंद्रयान 2 के रूप में परिणति के शिखर पर पहुंच चुका है, जिसमें चंद्रयान 2 के लैंडर विक्रम और उसके अंदर संयोजित रोवर प्रज्ञान चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर 2 क्रैटरों मैग्नीस सी और सिम्पेलिस एन के बीच मुख्य संभावित अवतरण क्षेत्र SLS-54 PLS-1 जो 70.90267 साउथ अक्षांश या लैटिट्यूड और 22.7811 ईस्ट पूर्व देशांतर या लॉन्जिट्यूड के बीच उतरकर आज भारत के अंतरिक्ष इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ेगा. आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस अक्षांश और देशांतर पर उतरने के लिए लगभग 84 मिनट पहले ही पूर्व निर्धारित निर्देशांकों 70.89992 साउथ अक्षांश और 22.7811 पूर्वांतर देशांतर को लैंडर के कंप्यूटर को भेज दिया गया है. किन्हीं तकनीकी कारणों के चलते अगर ये संभव न हो सका तो इसरो ने इसके लिए दूसरा विकल्प भी तैयार रखा है, जो ALS-0, ALS-1 जो 67.74915 साउथ अक्षांश और 18.46947 वेस्ट देशांतर लॉन्जिट्यूड का चयन कर लिया गया है. आज के दिन तक पहुंचने से पहले चंद्रयान 2 की 48 दिनों की ये लंबी सुनियोजित यात्रा चुनौतियों, कल्पनाओं और यथार्थ की गणनाओं से भरी हुई थी और आज ये यात्रा आज अपने अंतिम पड़ाव पर आ पहुंची है. इस संपूर्ण यात्रा का वृत्तांत अगर सार संक्षेप में कहें तो केवल इतना कि एक तरफ चुनौतियों की कमी नहीं थी तो दूसरी तरफ चंद्रयान 2 के सृजनकर्ताओं के आत्मविश्वास और तकनीकी नेतृत्व में भी कभी कोई कमी नहीं आई. तभी आज भारतीय वैज्ञानिकों और उनका ये अभियान हर कसौटियों पर खरा उतरा है. तभी ये अभियान तकनीकी और एक लंबे इंतज़ार के बाद आज वो घड़ी आ ही गई जब हम अपने इस अभियान को पूरा करने के साथ ही एक ऐसा इतिहास रचने जा रहे हैं जो आने वाले दिनों में एक मील का पत्थर साबित होगा. किसी भी अंतरिक्ष विज्ञान समृद्ध राष्ट्र के लिए वो दिन बहुत मायने रखता है जब वो शेष विश्व की तकनीकी और विज्ञान के उन्नत राह पर कदम से कदम मिलाकर चलने को तत्पर हो और तैयार हो. गर्व और उत्साह, आत्मविश्वास और प्रगति पथ पर अग्रसर होने की चाह,
जैसी भावनाओं का मिला जुला प्रवाह आज चंद्रयान 2 के साथ हर भारतीय के दिल में जागृत है। इस समय आप मिशन कॉम्प्लेक्स के अंदर का ये विहंगम दृश्य देख रहे हैं। बड़ी बेसब्री से हर भारतीय वैज्ञानिक आंकड़ों पर गहन नज़र बनाए हुए है। हर आंकड़े अपने आप में एक पूरी कहानी बयान करते हैं। The countdown is at minus 22 minutes, 2 seconds to go. After 22 minutes, you will be witnessing the descent, powered descent of the Vikram lander module. As I just mentioned, the Vikram lander module is presently orbiting in an orbit of 30 kilometers perihelion, which is the lowest altitude from the surface of the moon, and the apollune, which is the highest point of the orbit from the surface of moon, is around 100 kilometers. And once the descent operation starts, we expect to take roughly around 15 minutes. And some of the important events during the descent phase, which we'll be covering in the subsequent point as we go closer to this particular activity. But before we do that, just to get a update on the orbiter module, which has been orbiting in an orbit of around 100 kilometers. As you are all aware, the total mass of orbiter module is 2,369 kilograms. At launch, we had the composite module of orbiter and the Vikram lander, which was 3,850. So the orbital module, now that it has got separated from the Vikram lander, has a mass of almost 2,370 kilograms. And out of this total mass, the orbiter, the fuel the orbiter carried was almost 1,683 kilograms. So eventually, if you look at the capability of the orbiter, almost 70% of its mass is the fuel. And the primary reason for requirement of such a large quantity of fuel is basically to raise the orbit from the Earth to the moon and then lower it down very close to the moon. As I already mentioned, when the spacecraft was injected in an orbit of around 39,000 kilometers around the Earth, eventually the orbit using the propulsion system of the orbiter was raised to 400,000 plus kilometers to get captured in the sphere of influence of the moon. So the orbiter model has a single engine which has performed nearly 10 orbital raising and lowering maneuvers, and in the process, if you look at it, is almost operated for nearly 10,000 plus seconds, which is quite a substantial time as far as the number of times and the duration for which the thruster was fired. So orbiter, in addition to all the technological elements and the challenges, has 8 scientific payloads on board, and which are primarily meant for several scientific purposes, namely carrying out the 3-dimensional mapping of the lunar surface, chemical composition, high-resolution imaging of the landing site, mapping lunar craters in the polar regions, in addition to study of lunar exosphere. So life of the orbiter right now is around 1 year in orbit, as it will be orbiting around 100 kilometers from the surface of the moon, and it has, as I mentioned, several scientific measurements. So the countdown is now minus 19 minutes. So on your screen you can see a plot of the time when the Vikram is going to descend from an altitude of almost 30 kilometers. It's going to cover nearly 600 plus kilometers at touchdown, and we are very close to that particular event to happen. As I mentioned, during the powered descent time, it will be several phases over which the orbiter will be brought down to the lunar surface. It's not a single event where we just reduce the velocity and go to a lower altitude. It will be going through several phases of orbital altitude reduction and the velocity reduction, which we will explain as we come closer to this flight event. जी हाँ, इस समय हम लगभग 18 मिनट की दूरी पर जब विक्रम जो है वो उसका डिसेंड या उसका अवतरण शुरू होगा, अन्वेषण की तरफ बढ़ते हुए भारतीय कदम जो हैं उसी की दिशा में चंद्रयान 2 एक और कड़ी है। चंद्रमा हमें पृथ्वी के क्रमिक विकास और सौर मंडल के पर्यावरण की अविश्वसनीय जानकारियां दे सकता है। वैसे तो कुछ परिपक्व मॉडल मौजूद हैं, लेकिन चंद्रमा की उत्पत्ति के बारे में और अधिक स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। चंद्रमा की सतह को व्यापक बनाकर इसकी संरचना में बदलाव का अध्ययन करने में मदद मिलेगी। चंद्रमा की उत्पत्ति और विकास के बारे में भी
कई महत्वपूर्ण सूचनाएं जुटाई जा सकेंगी। वहां पानी होने के सबूत तो चंद्रयान 1 ने खोज ही लिए थे और यह पता लगाया जा सकेगा कि चांद की सतह और उपसतह के कितने भाग में पानी है। चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव विशेष रूप से दिलचस्प है क्योंकि इसकी सतह का बड़ा हिस्सा उत्तरी ध्रुव की तुलना में अधिक छाया में रहता है। इसके चारों ओर स्थायी रूप से छाया में रहने वाले इन क्षेत्रों में पानी होने की संभावना अधिक होगी। चांद के दक्षिणी ध्रुव के क्षेत्र ठंडे क्रेटर्स जो गड्ढे हैं वहाँ पे प्रारंभिक सौर प्रणाली के लुप्त जीवाश्म रिकॉर्ड मौजूद हो सकते हैं। आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं डॉक्टर BN सुरेश को, डॉक्टर TK एलेक्स, ये दो महान वैज्ञानिक जो हैं भारत के एक तरह से स्तंभ कहे जा सकते हैं जिन्होंने रॉकेट में और उपग्रहों में विशेष भूमिका निभाई है। आप अंदर का दृश्य देख पा रहे हैं। इसी तरह से अगर हम आगे बात करें तो इस तरह के कई अंतरिक्ष अभियान भारत भेज चुका है। एस्ट्रोसैट था, मंगल कक्षत्र मिशन था, चंद्रयान 1 था और इसी तरह के अभियान आने वाले वर्षों में और भी हैं जहां पे इस तरह के अभियान आप देख पाएंगे। चंद्रयान मुख्य रूप से 3 मॉड्यूल से मिलकर बना हुआ है। ऑर्बिटर जो चंद्रमा की सतह का निरीक्षण करेगा और पृथ्वी तथा चंद्रयान 2 के लैंडर विक्रम के बीच संकेत रिले करेगा। विक्रम लैंडर विक्रम को चंद्रमा की सतह पर भारत की पहली सफल लैंडिंग के लिए अभिकल्पित किया गया है। प्रज्ञान रोवर ये 6 पहियों वाला वाहन है। इसका नाम प्रज्ञान जो संस्कृत के ज्ञान शब्द से लिया गया है। ये पहला अंतरिक्ष मिशन है जो चंद्रमा के दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र पर सफलतापूर्वक लैंडिंग का संचालन करेगा। पहला भारतीय अभियान है जो स्वदेशी तकनीक से चंद्रमा की सतह पर उतारा जाएगा। पहला भारतीय अभियान है जो देश में विकसित प्रौद्योगिकी के साथ चांद की सतह के बारे में जानकारियां जुटाएगा। और मेरे ख्याल से अगर ये आज सब कुछ सही होता है तो चंद्रमा की सतह पर रॉकेट उतारने वाला चौथा देश बन जाएगा। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन हो चुका है और कुछ ही क्षणों में वो हमारे इस कॉम्प्लेक्स के अंदर आ सकेंगे। हमारे उनके स्वागत के लिए हमारे इसरो के वरिष्ठ वैज्ञानिक और विभिन्न केंद्रों के निदेशक उनका स्वागत करते हुए जैसा कि आप इसको स्क्रीन पर देख पा रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत किया। इसरो के चेयरमैन डॉक्टर के शिवन ने, डॉक्टर कुन्नी कृष्ण जी जो URSC के डायरेक्टर हैं और डॉक्टर VV श्रीनिवासन जी जो इस ट्रैक के निदेशक हैं, वो इस समय माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करते हुए बहुत महत्वपूर्ण होता है वो देश वो क्षण जहाँ पे उसके रहनुमा उसके साथ खड़े होते हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण घड़ी है जब हमारे माननीय प्रधान जी हमारे साथ हैं। So we just witnessing the arrival of Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, who has just arrived here at the Mission Operation Complex at ISRO's Tracking and Telemetry Command Network in Bangalore. He will be amongst us to witness today's important historic event when Vikram lander will be on the surface of the moon. So on your screen, Dr. K. Shivan, Chairman ISRO, Indian Space Research Organization, giving him a brief outline of the mission where the Vikram lander and the rover Pragyan is being explained to him. Confirm the parameters are accepted. Honorable Prime Minister of India. We'll be moving to the dignitaries gallery. प्रधानमंत्री जी का उत्साह देखने लायक, हर छोटी छोटी चीज का बड़ी बारीकी से निरीक्षण करते हुए, चहलकदमी करते हुए धीरे धीरे अपने गंतव्य स्थल तक पहुंचते हुए। भारतीय वैज्ञानिकों का उत्साह बढ़ाने के लिए आज हमारे बीच एक बार फिर से मुझे याद आता है जब मार्स ऑर्बिटर मिशन के लिए इसी तरह हमारे बीच आए थे हमारे माननीय प्रधानमंत्री, और ये दोबारा एक बार फिर से सभी से परिचय लेते हुए डॉक्टर के राधाकृष्णन, इसरो के पूर्व चेयरमैन डॉक्टर कस्तूरी रंगन जी, उनके पीछे थे प्रोफेसर के विजय राघवन जी जो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, और इस तरीके से फिर से एक बार उन्होंने डॉक्टर सुरेश जी के सामने
उनसे हाथ मिलाए डॉक्टर टी.के. एलेक्स जी, डॉक्टर पी.एस. गोयल जी। सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी अपना स्थान ग्रहण करते हुए। So the countdown is at minus 12 minutes. So within the next 12 minutes, you will have the command that will be issued for starting the descent phase of Vikram lander. So Honorable Prime Minister of India is seated in the dignitaries gallery along with some of the other senior officials of ISRO as well who are here. And in the dignitaries gallery, we also have some of the other prominent and very important dignitaries who will be witnessing the launch. As you would have seen during the coverage, we have a lot of students who have been invited here to witness the launch. This basically the students who are here have been selected based on the online space quiz competition that was conducted for the students who are in the range of class 8 to 10 across all the states in India. And finally, 2 students from each of the state and union territories have been selected to witness this historic lunar landing event along with Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji. So today we have amongst us nearly 84 plus school students who are here in the mission operations complex. जी हाँ, आपको याद दिलाता चलूं कि चंद्रमा के लिए भारत का प्रथम मिशन चंद्रयान 1 श्रीहरिकोटा से 22 अक्टूबर 2008 को सफलतापूर्वक प्रमोचित किया गया था। अंतरिक्ष यान चंद्रमा की रासायनिक, खनिज विज्ञानी एवं प्रकाश भूविज्ञानी मानचित्रण हेतु चंद्रमा की सतह से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर चंद्रमा के चारों ओर परिक्रमा कर रहा था। अभियान के इस मुकाम पर उपयुक्त होगा अगर हम उन दिनों की भी याद कर लें जब इस उपग्रह को GSLV Mark 3 M1 द्वारा 22 जुलाई 2019 को 14:43 पर 973.7 सेकंड की उस उड़ान ने चंद्रयान को 181.617 किलोमीटर की ऊंचाई पर छोड़ा था। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा कि अभी आपको एक छोटी सी वीडियो क्लिपिंग के जरिए उसी तरह की उन्हीं घटनाओं की याद दिलाई जाए ताकि हम यहाँ से और आगे बढ़ सकें। इस समय हम करीब 11 मिनट की दूरी पर ये एक छोटी सी वीडियो क्लिपिंग आपके लिए, जिसमें हम ये कोशिश करेंगे कि आपको याद दिला सकें कि कैसा था वो प्रक्षेपण। We have the view of the Mission Control Center at the Mission Operation Complex. 8, 7, 6. So short video documentary for you, and just to depict the launch that has happened on 22nd of July from Satish Dhawan Space Center. This is the liftoff of the GSLV Mark 3 launcher from Sriharikota. So as you can see, the 2 solid strap-ons, 200 tons each, have been separated. And now we are in the stage where the payload fairing, inside which the Chandrayan 2 spacecraft, including the orbiter and lander, is there. The separation of the first stage, the liquid stage L110, and finally the launcher placing the Chandrayan 2 spacecraft in an orbit of 170 by 39,000 kilometers around the Earth. So once the orbit of the Chandrayan 2 was 39,000 kilometers with a perigee of 170, as you can see on your screen, using its propulsion system, it performed 4 earthbound maneuvers to raise the orbital altitudes in preparation to enter the lunar transfer trajectory and then go to the lunar orbit. So right now what you're seeing is the orbit of Chandrayan 2 being raised around the Earth, and once this is done, the spacecraft has entered the lunar transfer trajectory phase and it is proceeding towards the moon's orbit, and very shortly you will see the Chandrayan 2 spacecraft has been captured in the sphere of influence around the moon, and it will start orbiting with an altitude of almost 18,000 kilometers by 120 kilometers.
and then subsequently using the propulsion system of the Chandrayan-2, which is the orbiter module, the orbit was brought down to an altitude of almost 100 kilometers. So in the process of bringing it down from 18,000 to 100 kilometers around the moon, it performed nearly 4 orbital descent maneuvers, and you can see now the orbiter and the lander Vikram will get separated, and eventually the Vikram lander module, using its propulsion system, has brought down the altitude to something like 30 kilometers by 100 kilometers. So as I have mentioned repeatedly, the Vikram lander module is presently in an orbit of around 30 kilometers. By 100 kilometers, 30 kilometers is the minimum height above the lunar surface, where the powered descent operations will be starting. And I think we are very close to the event when the Vikram lander thruster will be initiated. Roughly around 6 minutes to go before we start the powered descent operations. जी हाँ, हम करीब 7 मिनट की दूरी पर जहाँ से डिसेंट शुरू होना है, जहाँ से उस घड़ी की शुरुआत होगी जब हम लगभग 35 किलोमीटर की पेरिजी की ऊंचाई से हम उतरना शुरू करेंगे। जिन दर्शकों ने इस अभियान को शुरू से फॉलो नहीं किया है, उनकी जानकारी के लिए संक्षेप में बता दूं कि प्रक्षेपण के पश्चात 24, 25, 29 जुलाई और 6-8 अगस्त को पृथ्वी की कक्षा में 5 मैन्यूअर्स किए गए, जिसमें तकरीबन 508.4 किलोग्राम प्रणोदक का कुल 3604.254 सेकंड तक प्रज्वलित कर कक्षीय परिवर्तन किया गया, जहां कक्षा उत्थान किया गया। इसके पश्चात 13 अगस्त को ट्रांस लूनर इंजेक्शन TLI के दौरान 166.8 किलोग्राम प्रणोदक की खपत कर 158.309 मीटर प्रति सेकंड की वेग वृद्धि की गई और चंद्रयान 2 को पृथ्वी की कक्षा से चंद्रमा की कक्षा में स्थानांतरित कर दिया गया। चंद्रयान 2 ऑर्बिटर मिशन के लंबे अतिपर्वणीय पथ पर एक ऐसा बिंदु आता है जो चंद्रमा के प्रभाव क्षेत्र के अंदर होता है। इसे लूनर ऑर्बिटल इंसर्शन या LOI कहते हैं, और इसी बिंदु पर भू आदेश के द्वारा कक्षा की दिशा में परिवर्तन कर उसे चंद्रमा की दीर्घवृत्तीय कक्षा में पहुंचा दिया जाता है। फिर 20, 21, 28, 30 अगस्त और 1 सितंबर को 745.04 किलोग्राम प्रणोदक को कुल 4422.806 सेकंड तक प्रज्वलित कर चंद्रमा की निम्न कक्षा में प्रवेश करा दिया गया। इस समय पेरिलुइन लगभग 120.5 किलोमीटर और एपोलुइन 126.1 किलोमीटर प्राप्त कर लिया गया है। आप अपने स्क्रीन पर इसरो उपग्रह केंद्र के UR राव उपग्रह केंद्र के विभिन्न वरिष्ठ वैज्ञानिकों का बड़ी बारीकी से अध्ययन करते हुए देख पा रहे हैं, क्योंकि इस समय हम केवल 5 मिनट की दूरी पर हैं और हर छोटी बड़ी घटनाएं जो भी इस समय लगातार घट रही हैं उनका बारीकी से अध्ययन किया जा रहा है। और जिस समय हम करीब 1:38 सुबह के हम चंद्रमा के उस बिंदु पे पहुंचेंगे जहां ऊंचाई करीब 35 किलोमीटर होगी, उसी क्षण में ऑर्बिटर भी जो होगा वो बिल्कुल उपग्रह के ऊपर होगा, इस तरह से ताकि हम उसके चित्र प्राप्त कर सकें। So minus 3 minutes 53 seconds before we start the power descent operation. Just to give a quick update on the way the total power descent operation for the Vikram lander would be carried out. The descent operation would, as you can see on the screen, we are at 3 minutes to go before we start these operations. So Vikram lander would commence from an altitude of 30 kilometers, and once this descent operation has started, it will be for a duration of nearly 15 minutes before it touches down on the lunar surface. And the Vikram landing sequence is achieved through an autonomous landing sequencer. And just to give an update, the final state vectors and other parameters have already been loaded into the Vikram lander 4 hours prior, so it's all ready to go and start its operations. So as per the power descent plan, it's expected to start at 1 hour 38 minutes Indian Standard Time. As I mentioned, we are just less than 3 minutes now, and this entire power descent operation will be carried out in 4 different phases of operation, namely the first phase, which is the phase referred as rough braking phase, will bring the spacecraft from 30 kilometers to an altitude of almost 7.4 kilometers.
The second phase after the rough braking phase will be attitude and absolute navigation control phase, which will enable the spacecraft to travel from 7.4 to 5 kilometers. And then immediately we will have the third phase of operation, which is the fine braking phase, where we bring down the spacecraft from 5 kilometers to almost at an altitude of 400 meters above the surface where the landing is supposed to happen. And eventually from 400 kilometers, the vehicle, the spacecraft will not have any forward moving velocity. It will be only used to have a vertical descent for a touchdown. So the final phase of operation after the fine braking phase will be the terminal descent phase, where the Vikram lander will be brought from an altitude of 400 meters to 100 meters to 60 meters to 10 meters and finally the touchdown. So as we go through these operations, as I mentioned, it will be a 15 minutes of descent operation. Once the activity is initiated, we will be bringing you some of the flight parameters and the status, how the total operations are going on. So each of these phases during the power descent are very critical and important in its own way, as it has a very specific objective and the goals to be achieved during the entire phase of operations. So maybe another 1 minute, 19 seconds to go. The further update as far as the descent operation is concerned, the Vikram lander has 4 main propulsion engines, each generating a thrust of nearly 800 newtons. And out of these 5 main engines, the 4 engines are throttleable liquid engines, which means we will be able to regulate the thrust of the engine, like increasing the speed or decreasing the speed of the engine to achieve the required deboost velocity. Another 48 seconds to go before this deboost or firing of the engines. The 4 thruster engine, throttleable engines are carried out. जी हाँ, थोड़े तनाव भरे क्षण जरूर हैं, क्योंकि हम बेहद करीब 32 सेकंड के जब विक्रम को धीरे धीरे उतारा जाएगा नीचे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि कैसे उतरते समय उसके वेग मान को कम किया जा सके, जिसे हम रफ ब्रेकिंग फेज कह सकते हैं। और इस रफ ब्रेकिंग फेज के दौरान हम जो उसमें लगे हुए 8 थ्रॉटलेबल इंजन हैं, जिससे उसके प्रणोद बल को कम किया जा सकेगा। ऐसे 4 इंजन 4 कॉर्नर पे लगे हुए हैं, 4 कोनों पे लगे हुए हैं, और ऐसा ही एक 800 न्यूटन का इंजन जो है बीच में लगा हुआ। और बिल्कुल हम करीब इस समय विक्रम डिसेंट के स्टार्ट कर दिया गया है, और रफ ब्रेकिंग जो वो है घड़ी है वो बहुत ही नज़दीक होगी। इस समय हम धीरे धीरे अब उसकी गति को कम करना शुरू करेंगे। Yes, the descent phase of operation for the Vikram lander has just been initiated with the firing of the 4 liquid engines, which I was mentioning, the 4 throttleable engines. The activity has just started, and right now we are at 35 seconds since the engines have fired. And just to give an update, the Vikram lander, when it was in an orbit of around 30 kilometers, when the descent operation started, it had a velocity of nearly 1640 meters per second. So what we are going to do through this entire phase of 15 minutes of operation, when the power descent will be done, is to make this orbital velocity of the Vikram lander from 1640 meters per second to almost 0 meters per second, so that the spacecraft could land on the surface of the moon. So the activity has just initiated. As you can see on your screen, the view of the Mission Control Center with Chairman ISRO and Director of URSC, and Dr. Suresh briefing the Honorable Prime Minister about the flight event that are going on. So the time elapsed is almost 1 minute 28 seconds. जी हाँ, धीरे धीरे गति कम होती हुई 1507 मीटर प्रति सेकंड हो चुकी है, जबकि हमने 1630 मीटर प्रति सेकंड की गति से प्रारंभ किया था। और हर घड़ी की, हर क्षण की जो जानकारी है वो प्रधानमंत्री को पहुंचाई जा रही है। और इस समय हम करीब 1 मिनट 52 सेकंड का समय व्यतीत कर चुके हैं, और वेगमान लगातार घटता हुआ। और यही उद्देश्य भी हमारा है कि धीरे धीरे जो रफ ब्रेकिंग है उसके दौरान चारों जो इंजन हैं, उन चारों 800 न्यूटन वाले इंजन जो भारत ने पहली बार विकसित किए हैं, ये पूरी जो प्रणोद प्रणाली है ये पहली बार विकसित की गई है। और इस प्रणाली के चारों इंजन लगातार फायर करते हुए, प्रज्वलित होते हुए और लगातार वेगमान घटता हुआ।
So almost 2 minutes 20 seconds, and we expect this rough braking phase which was just initiated to last for nearly 10 minutes, during which time the velocity, the orbital velocity which the Vikram lander possessed of the order of 1640 meter per second should reach to something like 140 meter per second at the end of the rough braking phase. So basically during this phase it's a real brute force of operation where we are trying to kill the velocity which the spacecraft currently has, making it revolve around the moon with an orbital altitude of 30 by 100 kilometers. So I am seeing on my screen that the velocity from 1680 meter per second has come down to almost 1300, so nearly 350 meter per second velocity for the Vikram lander has been reduced. 3 minutes have elapsed, and maybe another next 7 minutes we should have quite a substantial reduction in the velocity to ensure that at touchdown we have almost near 0 meter per second velocity, to ensure that the Vikram lander has a soft landing on the surface of the moon at the very desired landing site location. So we are right now in the rough braking phase of operation, nearing 3 minutes 39 or 40 seconds, and almost I would say 480 meter per second velocity has been reduced, which is clear indication that the entire operations during which the 4 throttleable engines are being fired has been performing absolutely nominally, and the reduction in the velocity and the down range, the range it has to, after the descent operation has started, it has to cross almost a range of 600 kilometers before it lands at a predefined destination. So I am seeing a very close match with the pre-flight and the flight prediction. The velocity of the Vikram lander has come very close to 1100 meter per second, so almost to 500 meter per second velocity reduction has happened in just 4 minutes. So another 6 minutes to go before we reach in the mission objectives of the rough braking phase. जी हाँ, करीब 6 मिनट का समय 4 मिनट का समय व्यतीत हो गया है। 6 मिनट लगभग और वेगमान कम करने के लिए लगेंगे। इस समय करीब जो सारी गतिविधियां हैं, सारी प्रणालियां हैं, वो अभीष्ट रूप से चल रही हैं। इस अवतरण को सुरक्षित और कोमल या सेफ एंड सॉफ्ट लैंडिंग बनाने के लिए अनेक अभिकल्पनाओं पर विस्तृत चर्चा और गहन अध्ययन के पश्चात ही विशेषज्ञों ने अनुमति प्रदान की थी। इसरो के लिए ये सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि इसरो ये पहली बार करने जा रहा है। इसके लिए प्रोपल्सन, ऑनबोर्ड कंप्यूटर, सेंसर्स, स्ट्रक्चर, मैकेनिज्म, थर्मल जैसी अनेक प्रणालियों के उचित सामंजस्य से ये सब कुछ संभव हो सकेगा। और सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सारी गतिविधियां स्वचालित रूप से चल रही हैं। इस दौरान लैंडर में लगे अनेक संसूचक जरूरत के अनुसार आंकड़े उपलब्ध करा रहे हैं और ऑनबोर्ड कंप्यूटर उचित गणना के आधार पर यथोचित निर्णय लेकर लैंडर को चंद्रमा की तरफ उतरने में सहायक सिद्ध हो रहा है। करीब 939 मीटर प्रति सेकंड का वेग हम प्राप्त कर चुके हैं। लगभग अगर हम बात करें तो करीब 700 मीटर प्रति सेकंड का वेग हम घटा चुके हैं। इसलिए हम ये बड़े कॉन्फिडेंस से, आत्मविश्वास से कह सकते हैं कि हमारी जो ये प्रणोदक प्रणाली है, प्रोपल्सन सिस्टम है, ये बड़े ही सुचारू रूप से गतिविधियां अपना निष्पादन दे रहा है। इस समय हम करीब 6 मिनट व्यतीत कर चुके हैं और आने वाले 4 और मिनट में हम लगभग जो इसका क्षैतिज मान है वो हम काफ़ी कम कर पाएंगे। करीब 0 के बराबर, लगभग 140 मीटर प्रति सेकंड रह जाएगा। So almost 6 minutes have elapsed since we started the power descent operation, and we are still in the rough braking phase with the next 4 minutes to go. And if I look at the velocity that has dropped from the time the power descent operation was initiated, nearly 50% of the orbital velocity has been reduced. So we started with 1680 meter per second. Presently the Vikram lander is descending towards the lunar surface, and it has a velocity of 760. So we expect in the next 3 minutes the velocity should come down to something like 146. So on your screen you can see the plot where we have on the x-axis the downrange, and on the y-axis is the altitude. So I think altitude has Alok has come down quite substantially now. We are almost maybe in the range of 10 to 20 kilometers. And velocity also is, I think maybe. So a very close match with respect to the pre-flight predictions.
and which clearly indicates the 4 throttleable steering engines, which has been basically designed for this Vikram lander for the first time, has been performing extremely well. And as per the plan, the timeline is going very precisely, 7 minutes 34 seconds. So maybe another 2.5 minutes to go. And we have almost touched the 630 meter per second. So maybe another 500 meter per second velocity is what we expect to get it reduced. At the same time, if you look at the down range, it has traveled quite close to the landing site now. Just we are maybe 75 kilometers away from the actual landing site. When the maneuver was initiated, we were almost 600 plus kilometers, and and quite a velocity, and I think it has been getting reduced quite substantially. The one thing I would like to just mention here, during the descent phase of operation, as I mentioned, the rough braking phase is the real brute force of velocity reduction, and since we are trying to bring an object from an orbiting around the lunar surface to have a touchdown, there is a need for us to reduce the velocity. It's something like braking, and quite eventually the job is being done now. Maybe it's around 450 meter per second and another 2 minutes. वो भी अभी तक प्रज्वलित हैं. हम करीब 7.4 किलोमीटर की ऊंचाई पर जब पहुंचेंगे, उस समय जो एब्सोल्यूट नेविगेशन फेज है वो शुरू कर दिया जाएगा, और ये बहुत महत्वपूर्ण होगा. इस समय जो लैंडर है वो थोड़ा सा अपने अक्ष से झुका हुआ होगा, और लगातार इस समय हम सारे वैज्ञानिक, आप अगर देख पा रहे होंगे, 73.3 वर्टिकल वेलोसिटी, और डाउन रेंज जो है करीब 18 किलोमीटर हम दूर पर हैं लैंडिंग साइट से. और इस समय जो इमेजर है उसका डेटा भी डाउनलोड हो रहा है. कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो भी बाकायदा ऑन हो चुके हैं. इस समय आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि हर वैज्ञानिक लगातार छोटे छोटे आंकड़ों पर नजर बनाए हुए है, और आप सुन पा रहे होते तालियों की गड़गड़ाहट के साथ 210 मीटर पर सेकंड की जो वेगमान है वो कर लिया गया है. और रफ ब्रेकिंग सिस्टम जो है, रफ ब्रेकिंग जो फेज था वो लगभग अपने अंतिम दौर पे. It's finished. So we have finished the rough braking phase now, because the target for that was 7.4 kilometers and the velocity was nearly 140. So the Vikram lander has successfully completed the rough braking phase, and now we have entered the next phase of operation, which is the absolute navigation or attitude control phase. And this particular event is going to last for nearly 38 seconds. And the 4 throttleable engines are continuously on, and we see the velocity is something like 86 meter per second, and roughly 4.43 kilometers away from the landing site. So all going well. Just awaiting the announcement for completing. Yes, the rough braking phase has been successfully completed, and we have entered the next phase of braking operation, which is the fine braking start, which is going to basically commence from 5 kilometer altitude, and this particular operation is going to last for nearly 96 seconds, wherein the Vikram lander will be reaching an altitude of just 400 meters above the landing site for initiating the vertical descent operations. So we are almost 11 minutes 52 seconds after the descent operation has started, just awaiting the announcement for the end of fine braking phase. 12 minutes. Maybe in another few seconds we should hear the announcement that the fine braking phase of operation has been completed, and we expect at the end of this the vehicle to reach an altitude of almost 400 meters. And the velocity right now, if you look at the plot, we have the Vikram lander has a horizontal velocity of nearly 48 meters and vertical velocity of 60 meters per second. जी हाँ, करीब 12 मिनट 30 सेकंड का समय व्यतीत हो चुका है. हम लोग काफ़ी नज़दीक चंद्रमा की सतह पर, और फाइन ब्रेकिंग जो है वो है फेज है वो लगभग ख़त्म होने की स्थिति में.
Just waiting for the confirmation for the fine breaking end. तनाव भरे क्षण होते हैं जब इस तरह की कोई भी घटना के हम बहुत ही करीब होते हैं, क्योंकि वर्टिकल डिसेंट स्टार्ट होने वाला हुआ, इसमें सारे संसूचक जो हैं वो लगातार अपनी गतिविधियां प्रदान कर रहे हैं. After the completion of the fine breaking end, we will have the vertical descent operations where the spacecraft will be moved from nearly 400 to 700 kilometers down to the lunar surface. GCS empty. Confirm the करीब 13 मिनट 48 सेकंड व्यतीत हो चुके हैं और एल्टीट्यूड जो है वो लगातार कम होता हुआ. We're just waiting for the confirmation. The spacecraft, as we see on the screen, is showing the horizontal and vertical velocity of nearly 48 and 59 meter per second. थोड़े से क्षण जहां पे हमें आंकड़ों की प्राप्ति के लिए इंतज़ार करना पड़ रहा है, जैसे ही आंकड़े प्राप्त होते हैं हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे. Confirm any signal from station. Stand by. Negative. No signal from Madrid. It's view of the mission control center. सभी के चेहरों पर थोड़े तनाव के क्षण, शायद आंकड़ों के निश्चितता के लिए हमें थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी. Once we have the updates from the mission control room, we will come back to you. So we're just awaiting for the लगभग राधाकृष्ण जी 16 मिनट 12 सेकंड बीत गए हैं और जो वेगमान है वो 48 और 59 ही दिखा रहा है, तो हम अभी आंकड़ों की पुष्टि के लिए थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे. OD Vikram, confirm station configuration for receiving both S-band and X-band are configured. That's affirmative. We are not receiving from Madrid, HBK and Mauritius. We are just awaiting for the updates from the mission control room, so please stand by. लगभग 17 मिनट 38 सेकंड व्यतीत हो चुके हैं और जब तक आंकड़े सामने नहीं आ जाते कुछ कहना मुश्किल है.
सभी वैज्ञानिक अपने कंसोल पर, कंप्यूटर पर आंकड़ों का अध्ययन करते हुए ताकि किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके। So view of the mission control center. हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, उनके चेहरे पर भी उत्सुकता या आंकड़ों का इंतज़ार बिल्कुल साफ दिखाई पड़ा और मिशन के वैज्ञानिक आपसी डिस्कशन के बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकेगा। ये जो आप ग्राफ अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये विक्रम डिसेंट ट्रेजेक्ट्री है। कैसे किस तरह से जो वर्टिकल एल्टीट्यूड था, जो ऊंचाई थी वो, और आंकड़े नीचे प्राप्त हुए, उसके बारे में। So Chairman ISRO just giving briefing to the Honorable Prime Minister of India. So looks like they are just looking at the flight data. All subsystems MD, orbiter operations are on. In fact, at the end of the fine braking phase, the Vikram lander should have been at an altitude of almost nearly 400 meters. And if you look at the plots, we are seeing that it has most reached close to 1 kilometer from the landing site. हम लोग लैंडिंग साइट के बेहद करीब पहुंच गए थे। शायद इसरो के चेयरमैन ने प्रधानमंत्री को कुछ संदेश दिया। प्रधानमंत्री जी धीरे धीरे अब कक्ष से नीचे आते हुए आप जल्दी ही किसी भी घोषणा की उम्मीद कर सकते हैं। कुछ ही क्षणों में हम जो आंकड़ों को अध्ययन के बाद जो भी निष्कर्ष होगा उस तक पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री जी धीरे धीरे अपने कक्ष से नीचे उतर के नीचे आते हुए। We're just awaiting the Rate changed. No, there is no thing. I'm only telling that in case just the RF went off and the module was not being some
All are requested to be in your seat, please.
RF orbiter confirmed. SSR is receiving data. RF to confirm. Does it mean lander is, orbiter communication is on? Noted. जितने भी आंकड़े प्राप्त हुए हैं उनके अध्ययन के आधार पर जो भी निष्कर्ष निकाला जा सकेगा उसकी कुछ ही क्षणों में घोषणा की जाएगी, इसलिए हम प्रतीक्षा में।
जो भी अंतरिक्षीय अभियान होते हैं उसमें इस तरह की अनिश्चितता की स्थिति होती है, इसलिए हमें जब तक आंकड़े नहीं मिल जाते, हम उनका अध्ययन नहीं कर लेते, तब तक किसी निष्कर्ष पर पहुंचना आसान नहीं होता। इसीलिए प्रतीक्षा अब भी बरकरार। मिशन कॉम्प्लेक्स के अंदर सभी वैज्ञानिक विचार विमर्श करते हुए जो भी आंकड़े प्राप्त हुए हैं उनके आधार पर अगर कुछ कहा जा सके तो इसी प्रतीक्षा में This is Mission Control Center. Vikram lander descent was as planned and the normal performance was observed up to an altitude of 2.1 kilometer. Subsequently, the communication from lander to ground station was lost. The data is being analyzed. Repeat, Vikram lander descent was as planned and normal performance was observed up to an altitude of 2.1 kilometer. Subsequently, the communications from the lander to ground station was lost. The data is being analyzed.
the way there. देखिए, जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और जब मैं देख रहा था कि अब कम्युनिकेशन ऑफ हो गया है तो मैं देख रहा था आपके सारे चेहरे एकदम से हो गए। लेकिन ये कोई छोटा अचीवमेंट नहीं है जो आप लोगों ने किया। देश आप पर गर्व करता है और आपकी इस मेहनत ने बहुत कुछ सिखाया भी। और जैसा मुझे बताया सब साइंटिस्टों ने कि अगर फिर से कम्युनिकेशन शुरू हुआ तो फिर तो ये बहुत सारी चीजें हमें देता रहे। तो होप फॉर द बेस्ट। लेकिन मेरी तरफ से आपको बहुत बधाई है। बहुत उत्तम सेवा की है आपने देश ने। आपने बहुत बड़ी सेवा की है विज्ञान की और आपने बहुत बड़ी सेवा की है मानव जात की। इस पड़ाव से भी हम बहुत कुछ सीख रहे हैं। आगे भी हमारी यात्रा जारी रहेगी और मैं पूरी तरह आपके साथ हूं। हिम्मत के साथ चलें। और आप ही के पुरुषार्थ से फिर से देश खुशी बनाने लग जाएगा, मुझे विश्वास है। विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू। Thank you. The top look, lot of changes there in the data. Lot of changes in the data. It got towards the end table. Pass is over, I think. That team event job. काम के बच्चे आए थे, बच्चे हो गया। स्टूडेंट फ्रॉम भूटान। You might be in the university. Oh, now you have to get different. That's the
He was complaining about planetarium. He's also from like this. Very sick. Pondicherry. One girl is there, one So like she this. is from Pondicherry. 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 Yes, sir. Okay. Enjoy your stay. Sir, I have one question. How do we get motivated? I mean, sir, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे इतने सारे क्विजेस और ये सब होते रहते हैं, तो बच्चे जब नया नया क्विज होता है तो बहुत उत्साहित रहते हैं, लेकिन ये देखा जाता है कभी कभी कि बाद में जब क्विज ख़त्म होने वाला होता है या बाद में उनका उत्साह मतलब काफ़ी कम हो जाता है. सर, आप हमें क्या राय देंगे, हम क्या स्ट्रैटेजी बनाएं कि जो हमारी डिटर्मिनेशन है मतलब वो एकदम मजबूत रहे. सर, तो देखिए, पहली बात है कि लक्ष्य बहुत बड़ा रहता है, फिर छोटे 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 हिस्सों में इसको बांटना चाहिए और जो पाया है उसको जोड़ते जाना चाहिए, जो मिस किया है उसको भूलते जाना चाहिए. हाँ, वरना उसी को तो है यार, उस दिन तो जाना था नहीं हुआ, उस दिन तो जाना था नहीं हुआ, तो फिर निराशा आ जाती. निराशा घुसने ही नहीं देनी पड़ती. Sir, one question. So one question. Sir, if I want, my aim is to become a president of India. So Wow. what steps I should follow? Why president? Why not prime minister? So prime minister. So, sir, what about? So I have a question. So many students are interested in space, but don't get opportunities to come there. What can you do for introducing more opportunities and chances for them? Well, I'll find out. This time I have started. Sir, one question. Sir, if a person scores 40 and another scores 100 on 100, surely the one who gets 100 would be better. So why is reservation there in our country? Because India is so developed now, it will become a superpower by 2020.
नमस्कार, मी स्वरदा चंद्रशेखर फडणवीस. माझं गाव समृद्ध गाव, माझ्या गावचा इतिहास, माझ्या गावचा बदल मला सारं काही सर्वांना अभिमानानं सांगायचंय. गावगाड्याच्या परिवर्तनाची नांदी, विकासातून झालेला कायापालट, सारं काही लाईव्ह 24 तास न्यूजवर. विकासाच्या वाटेवरचं गाव या मालिकेतून माझ्या गावचं बदलतं रूप पाहण्यासाठी मी सहभागी होतेय. तुम्हीही सहभागी व्हा. पाहायला विसरू नका विकासाच्या वाटेवरचं गाव लाईव्ह 24 तास न्यूजवर. धन्यवाद. उत्पन्न वाढीचा नवा मार्ग शोधताय? मग जगाच्या व्यापाराचा अभ्यास करा शेअर मार्केटच्या माध्यमातून. शेअर मार्केटचे तंत्रशुद्ध शिक्षण घेण्याची सुवर्ण संधी आता आपल्या कोल्हापूरमध्ये गो ग्रो मोर सोल्युशन क्लासेस मध्ये. बेसिक ते ऍडव्हान्स ट्रेनिंगचे प्रॅक्टिकल नॉलेज, फ्री स्टडी मटेरियल, लाईव्ह मार्केटमध्ये प्रॅक्टिस करण्याची संधी, बॅच नंतर लाईफ टाईम सपोर्ट, तज्ञ आणि अनुभवी स्टाफ, वैयक्तिक मार्गदर्शन, अद्ययावत स्टडी रूम, इक्विटी MCX मार्केट फ्युचर अँड ऑप्शन मार्केट कोर्स, सेकंड इन्कम सोर्स साठी सर्वोत्तम पर्याय, वेळेनुसार बॅचेस. महत्वाचं म्हणजे इथे कोणत्याही प्रकारची आर्थिक गुंतवणूक करून घेतली जात नाही. गो ग्रो मोर सोल्युशन क्लासेस म्हणजे भविष्यातील उज्ज्वल ध्येयाकडे निश्चित वाटचाल. गो ग्रो मोर सोल्युशन प्रायव्हेट लिमिटेड, शाहूपुरी 3री गल्ली, पुणे जनता बँके शेजारी, कोल्हापूर. मोबाईल 70 30 41 27 12. खेड्यापाड्यातल्या गोरगरिबांच्या पोरी सायबिडी झाल्या हो, कारण शहीद वीरपत्नी लक्ष्मी महाविद्यालयात BSc IT पासून ते मायक्रोबायोलॉजी पर्यंत आणि फूड सायन्स अँड न्यूट्रिशन ते MSc कम्प्युटर सायन्स एनालिटिकल केमिस्ट्री पर्यंत BCA, BA, मास मीडिया, LLB, DMLT असे विविध कोर्सेस एकाच छताखाली शिकता येतात. तसेच पहिल्या बॅचच्या 50हून अधिक विद्यार्थ्यांनी TCS, इन्फोसिस सारख्या बहुराष्ट्रीय कंपनीमध्ये निवड. शिवाय इथं आहेत तज्ञ आणि अनुभवी शिक्षक, डिजिटल क्लासरूम, सुसज्ज कम्प्युटर लॅब, प्रशस्त इमारत, निवासाची आणि बसची सोय आणि SNDT महिला विद्यापीठ मान्यता प्राप्त महाविद्यालय. बहुराष्ट्रीय कंपन्यांसोबत टायप असलेले ग्रामीण भागातील एकमेव महाविद्यालय म्हणजेच शहीद वीरपत्नी लक्ष्मी महाविद्यालय. पत्ता मुक्काम पोस्ट तिटवे, तालुका राधानगरी, जिल्हा कोल्हापूर. संपर्क 72 18 18 0066. गावाकडच्या बातम्या पाहण्यासाठी आमच्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि बाजूच्या बेल आयकॉनवरती क्लिक. महाराष्ट्रातील ताज्या घडामोडी पाहण्यासाठी लाईव्ह 24 तास न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा. लाईव्ह 24 तास न्यूज, श्वास मराठी माणसांचा. माझं गाव माझं खेड ही संकल्पना केव्हाच मागे पडून गावची कूस बदलली आहे. 21व्या शतकात बदलतं गाव बदलती खेडी ही संकल्पना आता सगळीकडे रुजू लागली आहे. विज्ञान तंत्रज्ञानाच्या युगात गावांचा चेहरा मोहरा बदलतोय. बदलती खेडी ही तर नागरिकांच्यासाठी नांदीच ठरत आहे. अशाच बदलत्या गावगाड्याचे रूप आम्ही दाखवणार आहोत मालिकेत. विकासाच्या वाटेवरचं गाव लाईव्ह 24 तास न्यूजवर. पाहायला विसरू नका विकासाच्या वाटेवरचं गाव. सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक, प्रशासकीय, औद्योगिक, कृषी, क्रीडा अशा विविध क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या आदर्श व्यक्तिमत्वांचा प्रेरणादायी प्रवास आम्ही उलगडणार आहोत. पहा आमचा खास कार्यक्रम मुलखा वेगळी माणसं. आपण जरूर पहा लाईव्ह 24 तास न्यूज. समाजभान जपणारी मुलखा वेगळी माणसं. राम राम मंडळी, मी शीतल हिरेमठ. माझा गाव समृद्ध गाव. माझ्या गावचा इतिहास लाख मोलाचा, अभिमानानं सांगण्यासारखा. अहो माझ्या गावानं केलेली प्रगती तर गावागावातून सांगण्यासारखी. विकासाच्या वाटेवर पहिलं पाऊल काय टाकलं आणि गरुड भरारीच घेतली. आणि अशा माझ्या गावची यशोगाथा सांगण्यासाठी आम्ही येत आहोत लाईव्ह 24 तास न्यूज वर. विकासाच्या वाटेवरचं गाव या मालिकेतून. मी तर हायच, पण तुम्ही पाहायला विसरू नका विकासाच्या वाटेवरचं गाव.
Lift-off normal. Data is लाईव्ह 24 तास न्यूज, श्वास मराठी माणसांचा. fed during the countdown to the onboard computers to enable most suitable steering of the launch vehicle through atmosphere. Up next, we will watch a curtain raiser video on this Event mission. number 465, request CGSS to confirm supply of GN2 to Cryon. Moon. This familiar object in the night sky has inspired the imagination of astronomers and ordinary people alike. From time immemorial, humans have marveled at the beauty of the moon, used it to count time and navigate the high seas. In modern times, Moon, the only natural satellite of the Earth, has acquired added importance due to the belief that Moon is the key to our understanding of the evolution of the solar system in general and Earth in particular. Besides, Moon's precious resources and low gravity have further endeared it to humans. India, a major spacefaring nation, has conducted a detailed exploration of the Moon through its Chandrayan program. The country has sent 2 robotic spacecraft to orbit the Moon and to take a repeated look at its surface. Chandrayan 1 demonstrated India's ability to reach the surface of the Moon at a place and time of its choice. And with it, India became the 4th country to reach the surface of the Moon in November 2008. Besides, Chandrayan 1's conclusive discovery of water on the Moon in 2009 was praised as a path-breaking discovery. The follow-on mission, Chandrayan 2, had an orbiter, a lander called Vikram, and a rover named Pragyan. In the past 4 years, the orbiter has repeatedly observed the lunar surface and even today is working satisfactorily. Now, 3,900 kilograms, Chandrayan 3 spacecraft is being sent to the Moon with the objective of making yet another focused attempt to slowly land on the lunar surface and to explore it with the help of a rover. Following the spacecraft launched by India's most capable rocket, LVM-3, the Chandrayan 3 lander carrying a rover within it will be carried into an orbit around the Moon by the propulsion module. A little later, the lander will separate from that module and will attempt to make a soft landing in the south polar region of the Moon. This region is of intense interest as it has many permanently shadowed craters which could contain water ice and precious minerals. Chandrayan 3 lander has 4 scientific instruments or payloads, of which one will study the moonquakes, while the other one studies as to how the surface of the Moon allows heat to flow through it. The third one will study the plasma environment near the Moon's surface. And the fourth instrument will enable scientists to measure the distance between the Earth and Moon very accurately. The 2 instruments on the rover help us study the composition of the Moon's surface using X-rays and laser respectively. While the lander and rover will be in direct contact with each other. The propulsion module circling the Moon will observe the light coming from Earth, the only planet which we know which is definitely teeming with life. This observation will help in understanding the nature of distant planets circling stars other than the Sun. As Chandrayan 3 undergoes important tests and gears up for launch,
thousands of ISRO scientists, including those who will launch it, control it, and receive the precious scientific information from it using giant dish antennas, are readying themselves for the challenging tasks ahead. In the past, their dedication and skill have enabled India to earn praise from across the world and made it proud. Let us wish them well in this great endeavor called Chandrayan 3. आपके सामने हैं इसरो के अध्यक्ष श्री एस सोमनाथ। अभी अभी आपने देखा एक संक्षिप्त वीडियो जिसमें एनिमेशन की मदद से इस पूरे मिशन की यात्रा को बताया गया है, इस मिशन के ऑब्जेक्टिव को समझाया गया। Chandrayan 3 has two predecessors with destination moon as their mission objective. Chandrayan 1, launched by PSLV C11 in October 2008, included lunar orbiter and impactor. During the mission life of around 10 months, Chandrayan 1 had mapped the minerals on lunar surface, acquired 70,000 images to help create 3D atlas of moon, and what's more, found water on moon's polar regions. Chandrayan 2, launched by LVM-3M1 on 22nd of July 2019, consisted of lunar orbiter, lander named Vikram, and rover named Pragyan. The orbiter is still providing insightful scientific information through its payloads like spectrometers, synthetic aperture radar, and cameras. चंद्रयान 3 की चंद्रमा की सतह में उतरने के इस मिशन को कुल 10 चरणों में पूरा किया जाएगा। संक्षेप में यह इस प्रकार है। सर्वप्रथम चंद्रयान 3 को LVM-3 प्रमोचक रॉकेट द्वारा पृथ्वी की एलिप्टिकल टारगेट ऑर्बिट, जो कि 170 बाई 36,500 किलोमीटर की ऑर्बिट है, उसमें प्रमोचित किया जाएगा। वहां से चंद्रयान में मैन्यूवर कर पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण की सहायता से चंद्रयान की गति को वृद्धि की जाएगी। फिर चंद्रयान पृथ्वी की कक्षा से निकलकर चंद्रमा की कक्षा में जाएगा। चंद्रमा की कक्षा में जाते ही उसमें फिर से मैन्यूवर कर चंद्रमा की 100 किलोमीटर की वृत्ताकार कक्षा में स्थापित किया जाएगा। फिर सही समय आने पर लैंडर मॉड्यूल को प्रोपल्शन मॉड्यूल से पृथक कर दिया जाएगा। यह आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यह है प्रोपल्शन मॉड्यूल। प्रोपल्शन मॉड्यूल का मुख्य उद्देश्य है लैंडर तथा रोवर को पृथ्वी की कक्षा से चंद्रमा की कक्षा में, जो कि 100 किलोमीटर की वृत्ताकार कक्षा होगी, उसमें उचित अभिवृत्ति में लैंडर मॉड्यूल को अपने से पृथक कर चंद्रमा की सतह पर भेजना है। ऐसा करने के लिए इसमें MMH और मॉन का प्रयोग कर 440 न्यूटन के थ्रस्टर्स वाले इंजन्स लगे हुए हैं। इसमें आवश्यक संचार सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। Speaking about the major milestones in the journey of Chandrayan 3 to the moon, the spacecraft consists of propulsion module, lander, and rover. Lander is planned to touch down at south pole of moon. The major 10 phases of the mission are: the first phase, called the Earth-centric phase, comprises of pre-launch, launch, ascent, and earthbound maneuver. While the second phase is the lunar transfer phase, as the name suggests, the Chandrayan spacecraft moves closer to the moon. Next 8 phases are in the moon orbit, the third being the lunar orbit insertion, followed by the moon-bound maneuvers phase, which mark the fourth phase. And next it is now that the propulsion module separates from the lunar module when 100 by 100 circular orbit of the moon is achieved. The Chandrayan 3 in its 6th phase carries out D-boost from 100 kilometers to 100 by 30 kilometers orbit, followed by the pre-landing phase as 7th phase, and then the most awaited landing phase takes place.
फ्लाइट कोएफिशिएंट लोडिंग कंप्लीट। आपके सामने है मिशन नियंत्रण कक्ष का दृश्य। सभी सेंटर डायरेक्टर्स अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस किस तरह पूरा हो रहा है। दर्शक दीर्घा भी इस इंतजार पे। प्रमोशन से हम 5 लाईव्ह 24 तास की दूरी पर हैं। श्वास मराठी माणसांचा। We are close to 4 minutes from the scheduled launch time. Minus 4 minutes. है इस दौरान सभी संचार तंत्रों की स्वास्थ्य जांच, बैटरी आवेशन पूर्ण किया जा चुका है। कुछ अंतिम गतिविधियां जैसे ऑनबोर्ड कंप्यूटर पर रियल टाइम प्रोग्राम लोड करना, पायरो लाइन को आर्म मोड में लाना, गैस टैंक का अंतिम आवेशन, और यह सभी घटनाएं संतोषजनक तरीके से पूर्ण की जा रही हैं। Minus 3 minutes. अब हम उड़ान से 3 मिनट की दूरी पर हैं। प्रमोशन तथा इस प्रमोशन की घटनाक्रम को पहले ही बताया जा चुका है। सर्वप्रथम दोनों S200 स्ट्रप-ऑन बूस्टर प्रज्वलित किए जाएंगे T0 पर। Pre-flight pressurization of the hydrogen tank commenced. S200 के प्रज्वलन के 108 सेकंड के पश्चात L110 जो कि Minus 2 minutes. तरल नोदक पर आधारित चरण है, इसका प्रज्वलन शुरू कर दिया जाएगा। L110 के प्रज्वलन के पश्चात करीब 137 सेकंड पर S200 बूस्टर्स को यान से पृथक कर दिया जाएगा। We are close to 1.5 minutes from the scheduled launch time. सभी दर्शकों को ज्ञात है यह एक ऐतिहासिक मिशन होने वाला है। पूरे भारतवर्ष की आंखें इसमें हैं। इस यादगार पल के लिए यहां सब उपस्थित Minus 1 minute. अब हम उड़ान से 1 मिनट की दूरी पर Minus 45 seconds. Minus 50 seconds. All sequencers armed. Stage ready. Minus TB ready. 45 seconds. Minus 40 seconds. L110 VHPP open. MOV Minus 79 open. 35 seconds. Minus 30 seconds. Real-time programs activated. Minus 25 seconds. L110 VSPP open. Minus 20 seconds. Minus 15. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Plus 5 seconds.
Lift-off normal. P1 Here tracking. we have a majestic liftoff of LVM-3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayan 3 spacecraft. P2 tracking. प्रज्वलन और सफलतापूर्ण उत्थापन LVM-3 M4 रॉकेट का। यह भीमकाय रॉकेट आसमान को चीरते हुए अपनी भयानक दहाड़ से चारों ओर कंपन उत्पन्न कर रहा है। इसे हम यहाँ महसूस कर सकते हैं और यही दहाड़ है जो वैज्ञानिकों को रोमांचित करती है। LVM-3 के उत्थापन के साथ ही हमारे अंतरिक्ष यान चंद्रयान 3 की चंद्रमा की यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। As the rocket is soaring through the clear skies, every second moving closer to the accomplishment of the most important milestone in its mission to moon. Every Indian witnessing the launch live is content with the feeling of watching history in the making. चंद्रमा की सतह पर अपना छाप छोड़ने के लिए चंद्रयान 3 अपने मिशन को पूरा करने निकल चुका है। वर्तमान में दोनों S-200 स्टेप ऑन बूस्टर सामान निष्पादन करते हुए अपनी निर्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ रहे हैं। The S-200 motors thrusting simultaneously, generating a peak thrust of close to 6,000 kilonewtons in vacuum. They are made of HTPB-based solid propellant. 200 नमस्कार, मी स्वरदा चंद्रशेखर फडणवीस. माझं गाव समृद्ध गाव, माझ्या गावचा इतिहास, माझ्या गावचा बदल मला सारं काही सर्वांना अभिमानानं सांगायचंय. गावगाड्याच्या परिवर्तनाची नांदी, विकासातून झालेला कायापालट, सारं काही लाईव्ह 24 तास न्यूजवर. विकासाच्या वाटेवरचं गाव या मालिकेतून माझ्या गावचं बदलतं रूप पाहण्यासाठी मी सहभागी होतेय. तुम्हीही सहभागी व्हा. पाहायला विसरू नका विकासाच्या वाटेवरचं गाव लाईव्ह 24 तास न्यूजवर. धन्यवाद. नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे मिशन चंद्रयान 3 टाइप के होते हैं. कई शब्द आप इसमें सुनोगे जैसे ऑर्बिट. लाईव्ह 24 तास न्यूज, श्वास मराठी माणसांचा. महाराष्ट्रातील ताज्या घडामोडी पाहण्यासाठी लाईव्ह 24 तास न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा. उत्पन्न वाढीचा नवा मार्ग शोधताय? मग जगाच्या व्यापाराचा अभ्यास करा शेअर मार्केटच्या माध्यमातून. शेअर मार्केटचे तंत्रशुद्ध शिक्षण घेण्याची सुवर्ण संधी आता आपल्या कोल्हापूरमध्ये. गो ग्रो मोर सोल्युशन क्लासेस मध्ये बेसिक ते ऍडव्हान्स ट्रेनिंगचे प्रॅक्टिकल नॉलेज, फ्री स्टडी मटेरियल, लाईव्ह मार्केटमध्ये प्रॅक्टिस करण्याची संधी, बॅच नंतर लाईफ टाइम सपोर्ट, तज्ञ आणि अनुभवी स्टाफ, वैयक्तिक मार्गदर्शन, अद्ययावत स्टडी रूम, इक्विटी MCX मार्केट फ्युचर अँड ऑप्शन मार्केट कोर्स, सेकंड इन्कम सोर्स साठी सर्वोत्तम पर्याय, वेळेनुसार बॅचेस. महत्वाचं म्हणजे इथे कोणत्याही प्रकारची आर्थिक गुंतवणूक करून घेतली जात नाही. गो ग्रो मोर सोल्युशन क्लासेस म्हणजे भविष्यातील उज्ज्वल ध्येयाकडे निश्चित वाटचाल. गो ग्रो मोर सोल्युशन प्रायव्हेट लिमिटेड, शाहूपुरी 3री गल्ली, पुणे जनता बँके शेजारी, कोल्हापूर. मोबाईल 70 30 41 27 12. Plus 5 seconds. Lift-off normal. P1 Here tracking. we have a majestic liftoff of LVM-3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayan 3 spacecraft. P2 tracking. प्रज्वलन और सफलतापूर्ण उत्थापन LVM-3 M4 रॉकेट का। यह भीमकाय रॉकेट आसमान को चीरते हुए अपनी भयानक दहाड़ से चारों ओर कंपन उत्पन्न कर रहा है।
इसे हम यहाँ महसूस कर सकते हैं और यही दहाड़ है जो वैज्ञानिकों को रोमांचित करती है। लाइव 24 तास न्यूज LVM-3 के उत्थापन के साथ ही हमारे अंतरिक्ष यान चंद्रयान 3 की चंद्रमा की यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। As the rocket is soaring through the clear skies, every second moving closer to the accomplishment of the most important milestone in its mission to moon. Every Indian witnessing the launch live is content with the feeling of watching history in the making. चंद्रमा की सतह पर अपना छाप छोड़ने के लिए चंद्रयान 3 अपने मिशन को पूरा करने LVM-3 के उत्थापन के साथ ही हमारे अंतरिक्ष यान चंद्रयान 3 की चंद्रमा की यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। As the rocket is soaring through the clear skies, every second moving closer to the accomplishment of the most important milestone in its mission to moon. Every Indian witnessing the launch live is content with the feeling of watching history in the making. चंद्रमा की सतह पर अपना छाप छोड़ने के लिए चंद्रयान 3 अपने मिशन को पूरा करने निकल चुका है। वर्तमान में दोनों S-200 स्टेप ऑन बूस्टर सामान निष्पादन करते हुए अपनी निर्दिष्ट 2, 1, 0 plus 5 seconds. Lift off normal. P1 Here tracking. we have a majestic liftoff of LVM-3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayan 3 spacecraft. P2 tracking. प्रज्वलन और सफलतापूर्ण उत्थापन LVM-3 M4 रॉकेट का। यह भीमकाय रॉकेट आसमान को चीरते हुए अपनी भयानक दहाड़ से चारों ओर कंपन उत्पन्न कर रहा है। इसे हम यहाँ महसूस कर सकते हैं और यही दहाड़ है जो वैज्ञानिकों को रोमांचित करती है। LVM-3 के उत्थापन के साथ ही हमारे अंतरिक्ष यान चंद्रयान 3 की चंद्रमा की यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। As the rocket is soaring through the clear skies, every second moving closer to the accomplishment of the most important milestone in its mission to moon. Every Indian witnessing the launch live is content with the feeling of watching history in the making. चंद्रमा की सतह पर अपना छाप छोड़ने के लिए चंद्रयान 3 अपने मिशन को पूरा करने निकल चुका है। वर्तमान में दोनों S-200 स्टेप ऑन बूस्टर सामान निष्पादन करते हुए अपनी निर्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ रहे हैं। लाईव्ह 24 तास न्यूज श्वास मराठी माणसांचा। महाराष्ट्रातील ताज्या घडामोडी पाहण्यासाठी लाईव्ह 24 तास न्यूज चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। Plus 5 seconds. Lift off normal. P1 Here tracking. we have a majestic liftoff of LVM-3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayan 3 spacecraft. P2 tracking. प्रज्वलन और सफलतापूर्ण उत्थापन LVM-3 M4 रॉकेट का। यह भीमकाय रॉकेट आसमान को चीरते हुए अपनी भयानक दहाड़ से चारों ओर कंपन उत्पन्न कर रहा है। इसे हम यहाँ महसूस कर सकते हैं और यही दहाड़ है जो वैज्ञानिकों को रोमांचित करती है। LVM-3 के उत्थापन के साथ ही हमारे अंतरिक्ष यान चंद्रयान 3 की चंद्रमा की यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। As the rocket is soaring through the clear skies, every second moving closer to the accomplishment of the most important milestone in its mission to moon.
Every Indian witnessing the launch live is content with the feeling of watching history in the making. चंद्रमा की सतह पर अपना छाप छोड़ने के लिए चंद्रयान 3 अपने मिशन को पूरा करने निकल चुका है। वर्तमान में दोनों S-200 स्टेप ऑन बूस्टर सामान निष्पादन करते हुए अपनी निर्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ रहे हैं। उत्पन्न वाढीचा नवा मार्ग शोधताय? मग जगाच्या व्यापाराचा अभ्यास करा शेअर मार्केटच्या माध्यमातून। शेअर मार्केटचे तंत्रशुद्ध शिक्षण घेण्याची सुवर्ण संधी आता आपल्या कोल्हापूरमध्ये गो ग्रो मोर सोल्युशन क्लासेस मध्ये। बेसिक ते ऍडव्हान्स ट्रेनिंगचे प्रॅक्टिकल नॉलेज, फ्री स्टडी मटेरियल, लाईव्ह मार्केटमध्ये प्रॅक्टिस करण्याची संधी, बॅच नंतर लाईफ टाइम सपोर्ट, तज्ञ आणि अनुभवी स्टाफ, वैयक्तिक मार्गदर्शन, अद्ययावत स्टडी रूम, इक्विटी MCX मार्केट फ्युचर अँड ऑप्शन मार्केट कोर्स, सेकंड इन्कम सोर्स साठी सर्वोत्तम पर्याय, वेळेनुसार बॅचेस। महत्वाचं म्हणजे इथे कोणत्याही प्रकारची आर्थिक गुंतवणूक करून घेतली जात नाही। गो ग्रो मोर सोल्युशन क्लासेस म्हणजे भविष्यातील उज्ज्वल ध्येयाकडे निश्चित वाटचाल। गो ग्रो मोर सोल्युशन प्रायव्हेट लिमिटेड, शाहूपुरी 3री गल्ली, पुणे जनता बँके शेजारी, कोल्हापूर। मोबाईल 70 30 41 27 12। It was this historic day of 24th September 2014 when India joined an elite club of nations who have successfully reached our nearest planetary neighbor, Mars. The 44 meters tall Polar Satellite Launch Vehicle successfully placed the MOM orbiter into the intended Earth orbit. Thereafter, it took a number of complicated maneuvers over a period close to 10 months to place the orbiter in the Martian orbit. The GSLV Mark III M1 rocket launched Chandrayan 2 on 22nd July 2019. Following a series of highly complex maneuvers, the spacecraft successfully completed its journey of approximately 3,84,000 kilometers to the lunar orbit. Though the lander experienced problems in its final descent phase, the orbiter with its instruments is providing answers of many questions on the moon, and the mission is still considered as a success. Team ISRO has made years of tireless efforts to develop necessary competence for carrying out such complex missions. We were spurred onto this journey in space by the visionary scientist Dr. Vikram Sarabhai, who said that if we have to play a meaningful role nationally and in the comity of the nations, we must be second to none in the application of advanced technologies to real problems of man and society. Following his vision, today ISRO maintains large constellations of communication and Earth observation satellites in different orbits around the Earth. These satellites have evolved over a period of time and have varied capabilities. The communication satellites enable both
the fixed and the mobile and broadband services using many advanced and state-of-the-art technologies like dual-gridded antenna reflectors, unfurlable antenna system, RF receivers, miniaturized dielectric resonator filters, solid-state amplifiers, high-power multiplexers, and so on. The Earth observation satellites operating in diverse regions of electromagnetic spectrum also use highly advanced technologies like phased array radars, hyperspectral imagers, CCD sensors, and optical camera systems. We also have today an operational Indian Regional Navigation Satellite System named NAVIC, which is a constellation of 7 satellites providing navigation services on Indian landmass and approximately 1500 kilometers around it. Team ISRO has also been successful in designing and implementing many satellite applications, which have proved highly useful for the development of the country. These include remote sensing applications related to agriculture, forestry, environment, disaster warning, planning of urban and rural housing. The satellite communication applications include countrywide telemedicine, tele-education, and disaster management networks, and so on. SATCOM-based solution for real-time monitoring of trains is one of the recently developed applications for Indian Railways. Team ISRO also has a fleet of launch vehicles, which place most of our satellites into orbit. The Polar Satellite Launch Vehicle, PSLV, has made large number of successful launches and is today looked upon as one of the most reliable launching system in the world. It has been shining successes like launching 104 satellites in one go, Chandrayan 1 and Mars Orbiter mission, and many more. Equipped with powerful indigenous cryogenic upper stages, the 2-ton capable geostationary satellite vehicle and the heavy lift 4-ton capable GSLV Mark III are also now operational launch vehicles. The successful maiden test flights of the Reusable Launch Vehicle Technology Demonstrator RLV-TD and Scramjet, the air-breathing technology demonstrator, are the other major highlights in the satellite launch vehicle technology area. Let us now take a look at how ISRO is spread across the nation and meet some of us. The headquarters of ISRO is located in Bengaluru. The policies, guidelines and program plans generated here are executed through 6 major centers and 12 units of ISRO, which are spread across the country. Vikram Sarabhai Space Center, VSSC at Thiruvananthapuram, is the largest center of ISRO, where the design and development activities of satellite launch vehicles and sounding rockets are carried out and made ready for launch operations. The center pursues research and development activities for associated technologies such as launch vehicle design, propellants, aerodynamics, avionics and polymers and composites. U.R. Rao Satellite Center, URSC in Bengaluru, develops the satellite platforms called BUS and carries out integration activities of satellite. It also carries out research and development activities in the areas of structures, thermal systems and spacecraft mechanisms, digital and communication systems, integration and power systems, and control systems. The activities at Space Application Center, SAC, focus on the design and development of space-borne instruments and payloads for ISRO missions. SAC also develops and operationalizes applications of space technologies, ground systems and data processing systems. All our rocket launches take place from Satish Dhawan Space Center, SHAR, SDSE, SHAR, at Sriharikota, one of the best-known names among the spaceports of the world. It has 2 launch pads and state-of-the-art assembly buildings for integrating launch vehicles, solid rocket motors development facility, and many others. The various other centers and units are involved with activities like development of liquid and cryogenic propellant system,
different types of sensors, inertial guidance systems, satellite imagery, and many other value-added services. Cooperation and joint missions are the buzzword today among the major space players of the world. Chandrayan 1 and Megatropics were the major such missions in which we collaborated with NASA and French Space Agency CNES respectively. Many more, such as ISRO NASA SAR, are ongoing. During the course of such missions, there are also opportunities to work with the best in the business at home and abroad. The near future holds quite a few exciting missions in store. The human spaceflight mission, also known as Gaganyaan, is expected to roll out by 2022, wherein Indian astronauts will spend 5 to 7 days in space before being brought safely back to the Earth. Other challenging missions include Aditya L1, the mission to the Sun, a Venus mission, and a landing experiment for India's reusable launch vehicle RLV, followed by a return flight experiment. ISRO stands for excellence, dedication, and an everlasting thirst for research and breaking new ground in various fields. It provides opportunity to its team to work in world-class facilities having latest equipment. The working atmosphere is modern and highly conducive for high technology research. From the days of Dr. Sarabhai, ISRO has welcomed talented youngsters into its fold. It comprises men and women from various reputed institutions of the country. Each one of them brings a unique set of life experiences, skill sets and knowledge, all of which blends into a cauldron of rich diversity with a single-minded goal of applying space technology for the benefit of the humanity. Give your ideas a lift-off and ignite your passions to watch your dreams soar. ISRO beckons you to join in its great journey to do things which very few get to do. महाराष्ट्रातील ताज्या घडामोडी पाहण्यासाठी लाईव्ह 24 तास न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा. उत्पन्न वाढीचा नवा मार्ग शोधताय? मग जगाच्या व्यापाराचा अभ्यास करा शेअर मार्केटच्या माध्यमातून. शेअर मार्केटचे तंत्रशुद्ध शिक्षण घेण्याची सुवर्ण संधी आता आपल्या कोल्हापूरमध्ये गो ग्रो मोर सोल्युशन क्लासेस मध्ये. बेसिक ते ऍडव्हान्स ट्रेनिंगचे प्रॅक्टिकल नॉलेज, फ्री स्टडी मटेरियल, लाईव्ह मार्केटमध्ये प्रॅक्टिस करण्याची संधी, बॅच नंतर लाईफ टाइम सपोर्ट, तज्ञ आणि अनुभवी स्टाफ, वैयक्तिक मार्गदर्शन, अद्ययावत स्टडी रूम, इक्विटी MCX मार्केट फ्युचर अँड ऑप्शन मार्केट कोर्स, सेकंड इन्कम सोर्स साठी सर्वोत्तम पर्याय, वेळेनुसार बॅचेस. महत्वाचं म्हणजे इथे कोणत्याही प्रकारची आर्थिक गुंतवणूक करून घेतली जात नाही. गो ग्रो मोर सोल्युशन क्लासेस म्हणजे भविष्यातील उज्ज्वल ध्येयाकडे निश्चित वाटचाल. गो ग्रो मोर सोल्युशन प्रायव्हेट लिमिटेड, शाहूपुरी 3री गल्ली, पुणे जनता बँके शेजारी, कोल्हापूर. मोबाईल 70 30 41 27 12. ISRO's Mars